Hi guys, welcome to the Shivangi Vasan podcast, and this is episode number 10. Oh my god, I can't believe that this is episode number 10 and I'm 10 episodes old now on this podcast. So this is just because of you guys. You are showing so much love and listening to my podcast and liking it, and I'll keep making it for you guys. और आज भी जो टॉपिक होने वाला है दैट्स नॉट रिलेटेड टू स्किन ऑफ कोर्स, बट आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है अगेन ऑन द पॉडकास्ट. शी इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट. बट येस, आज हम ज़रूरी नहीं है कि मेकअप आर्टिस्ट हैं या मेकअप आर्टिस्ट शो पे है तो हम मेकअप के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ हेयर. आप अपने हेयर को कैसे केयर कर सकते हैं. स्किन के बारे में तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं, बट आज का टॉपिक वुड बी हेयर. हेयर से रिलेटेड हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसी के ऊपर हम टॉपिक पे बात करेंगे आज. Guys, as I mentioned that today we have a very special guest again on our podcast. Her name is Nikita and she is a professional makeup artist based in Gurgaon, covering all the NCR region. And basically guys, she is a freelancer and travels all over the globe for her makeup work. Guys, can you believe she is a BTech graduate and was a software engineer? But it is her love towards her makeup that she has turned her passion into profession. That's really great. That sounds great. That she is so passionate about makeup कि उन्होंने अपना software engineering छोड़ के she has turned into a makeup artist. Makeup world ही ऐसा है जिसमें आप इतने passionate हो जाते हो. Even I was into teaching background and I've also turned a makeup artist due to so much love in this industry. I really love doing makeup. So let me introduce again to Nikita on our show. So welcome Nikita to the Shivangi Vasan podcast today. Thank you, Shivangi. Thank you for inviting me to your podcast episode, and I'm so glad that we collaborated for this. My pleasure. So, dear, I don't think so कि we are makeup artists and we should stick to only makeup topics, right? Right. So, आज का topic again, we will discuss about hair, right? Right. So, आज So, आप so lots of people on my page also were asking कि मैम आप क्या करते हो, आपके hair इतने beautiful कैसे हैं. So I think this is the right time that we are discussing this thing so that people on my page also get a chance to know what I am doing for my hair. Yeah, exactly. I think body part में like skin and hair है जिसकी वजह से makeup भी enhance होता है, right? अगर हमारे hair अच्छे नहीं होंगे या हमारा skin अच्छा नहीं होगा तो obviously I don't think so we'll look beautiful even putting lots of makeup on ourselves. Right. So we will be discussing about, पहले तो हम discuss करते हैं कि how to make our hair healthy. Okay. So to make your hair healthy, like to make any part of your body healthy, I think the work that is required is from the inside as well as outside. Because अगर आपकी skin में भी acne है and if you are taking medicines for that and if even after that you are taking oily food, तो acne कहीं नहीं आने वाले, they are going to be there. So similarly for hair also, if you are means taking care from inside as well as outside, तभी आपके hairs healthy रहेंगे. Like first if I talk about inside, that there should not be any deficiency of any nutrition in your body. So there should be proper intake of healthy food, green food, like there should be proper intake of proteins. And if I talk about the specific proteins, there should be intake of vitamin B12 and vitamin D has to be in place. And you should also take biotin supplement. I have started taking it recently because मेरे को बहुत hair fall हो रहा था अभी monsoons में. Okay. तो मैंने अभी biotin supplements भी लेना शुरू किए हैं and they are proving really good for me. So and of course we should consult a dermat before starting anything. So मैंने अपने dermatologist को consult किया था. तो उन्होंने ही मुझे बताया biotin supplements. So that is why I started taking it. And so which biotin you will recommend कि कौन से biotin you are using? Because market में बहुत सारे हैं. हाँ. Yeah, exactly. So I am taking a Hairful. The name of that capsule is, that is not a capsule, that's a tablet basically. So that is Hairful. It contains biotin and it contains all the other things that are required for your hair to grow properly and the deficiencies in your body जो हमारी होती हैं उसको fulfill करता है वो. And apart from that, I'm taking Par gummies also.
बिकॉज आई फेल्ट कि मेरी बॉडी में, बिकॉज रिसेंटली अभी मैंने बहुत ज्यादा वेट लॉस किया है लाइक Okay. 7-8 kg, तो उसके बाद मेरे को हेयर फॉल हुआ एंड आई जस्ट टोल्ड दिस टू माय डर्मेटोलॉजिस्ट, तो ही सेड कि योर हेयर आर फॉलिंग बिकॉज आपने ड्रास्टिकली जो वेट रिड्यूस किया है उसमें आपने बहुत सारे न्यूट्रिशन स्किप किए हैं, तो Okay. nutrients स्किप किए हैं बेसिकली. So yeah, so he consulted me and he also asked me to check my levels of vitamin B12, vitamin D, and my thyroid. These all things should be in place because हमारी अंदर से अगर कमियां होंगी, हम बाहर से जितने मर्जी स्पा करा लो, कोई भी ट्रीटमेंट ले लो, it is not gonna help in any way अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है. So yeah, and apart from this, you should also like not stress about it, because if you're stressing about your hair that they are not healthy, they are falling or anything, so it will fall more. So you should start practicing yoga, you should meditate, and you should just keep yourself healthy, joyful, because stress it's not gonna get cured, right? Yeah. So So now बाकी- these days we are getting gummies also, na? Hair gummies. Yeah, आजकल I'm मार्केट taking में. that. Yeah, you're taking Right. that. Okay. Yeah, वो तो मैंने अपने आप से लेना शुरू किया because I was searching so much, because मेरे हेयर फॉल नहीं होता था and suddenly वो स्टार्ट हो गया, so I got very worried कि oh God, ये क्या हो गया मेरे साथ. हाँ, exactly. So I think right kind of nutrition is the most Yeah. important. And Right. what else you recommend? Right kind of nutrition and And if we talk about the outside measures, so of course we should go for regular spa. अभी लॉकडाउन में I wasn't able to take care properly because I am a person who go for spas like regularly. मेरा हर फ्राइडे या हर सैटरडे संडे में स्पा जरूर लेती हूँ, मतलब मंथ में मैं 4 बार लेती हूँ, ऑल्दो कहते हैं मंथ में 2 बार भी इज फाइन, बट आई यूज टू गो टू सलॉन 4 times. मैं स्पाज वाले पैकेजेस चेक करती हूँ कि किस सलॉन में आए हैं. don't worry, even I take spa every week. मेरा भी हर वीक Yeah. होता है because my hair are totally chemically treated hair. Okay, yeah. Lot of- so Lot that of is also- colors, lot of smoothing, lot of everything I've done. Since being like 13 times I've done smoothing on my hair. So Oh, I go for spa very regularly. I'm very regular for that. right, and you should go for that because that is what it is required to keep our hair healthy, because it gets the proper like moisture, hydration जो उसको चाहिए होता है, वो spa में mask जो लगाते हैं वो उनसे मिल जाता है. And they also provide you steam, so that is also very necessary for your hair to grow and for your roots to be strong, you know. Yeah. So to make hair healthy, we have 3 points to remember. One is the right kind of nutrition. Second, regularly exercising. That is also must. And the third, you told that we should go for regular spas and hair treatments. Yeah, and one more thing that I would like to mention, that never go for 2 hair treatments at once. Like if you are taking smoothing and along with that you are taking hair color also, so that's gonna that is very harsh for hair, you know. It means this is my personal recommendation that if you're taking any treatment, then just give it a gap of 1 month or so, because आपके hair बहुत weak हो जाते हैं एक treatment, वो creams बहुत heavy होती हैं, तो आप उसमें स्मूथनिंग करा लेते हो, उसी में आप कलर मिक्स करवा लेते हो, तो वो हेयर पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है. That you're talking about chemical treatment, right? Chemical, Right. yeah. Okay. So another topic we would like to know is about the monsoon. You know, in the monsoon times we get a lot of problems on our hair, like hair fall हो जाता है, moisture बहुत होता है कहीं के hair में, उससे बहुत Right. सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है ड्यूरिंग द मानसून. सो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हेयर ड्यूरिंग मानसून, वो आप हमें थोड़ा सा टिप्स दो उसके बारे में. ओके, सो लाइक आई टोल्ड यू कि मेरे मॉनसून में अभी बहुत हेयर फॉल हुआ है, सो हाउ आई क्योर्ड इट, so I used to wash my hair twice or thrice a week to remove the excess oil or sweat that has accumulated in my head, because monsoon में आप जिस दिन हेयर वॉश करते हो उसके नेक्स्ट डे से यू स्टार्ट फीलिंग स्वेट एंड ऑयल की वो accumulate हो गया है. जितना मर्जी एसी में बैठ लो, जितना मर्जी कुछ कर लो. हाँ, सीरियसली, हाँ, स्कैल्प तो ऑयली होता है. Exactly. तो अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है और ह्यूमिड है तो उसमें डर्ट अट्रैक्ट होनी ही होनी है और स्कैल्प वीक पड़नी है. तो इट इज वेरी रिकमेंडेड इन मॉनसून सीजन स्पेशली कि आप हेड वॉश कम से कम 2 या 3 बार ही करो.
because that is gonna keep your scalp healthy. अगर आपकी scalp healthy है तो of course आपके hair healthy होंगे, and that is the best tip I can give कि आप अपने monsoon में अपने बाल को कैसे take care कर सकते हो. Because some people think हम ज़्यादा head wash करेंगे तो ज़्यादा breakage होगा, but they don't understand कि अगर आप head wash नहीं करोगे तो आपकी scalp कितनी dirty होगी, and dirty scalp होगी तो वो eventually it is gonna damage your hair, it is gonna damage your roots. Yes, yeah. So, and always use a conditioner, like a good conditioner, and not on your scalp, but yeah, on the tips of your hair, and just comb it with your fingers. And yeah, it gives the moisture to your hair. Always use a mask and stay hydrated. Drink lots and lots of water, and just eat good food. That's it. These are just some of the very important tips and very basic tips, to be frank. ये तो हम कर ही सकते हैं घर पे बैठे. हाँ, होम रेमेडीज तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेयर ऑल्सो कि हम घर पे बैठ के कोई भी हेयर रेमेडी मतलब होममेड रेमेडीज हेयर के लिए कर सकते हैं. हाँ, राइट. कोकोनट ऑयल, एलोवेरा तो आई पर्सनली डू नॉट यूज, बिकॉज एलोवेरा का भी मतलब आई हैव रेड इट समवेयर, आई डू नॉट नो, मतलब मुझे पता नहीं है, बट आई हैव रेड इट समवेयर दैट एलोवेरा का भी वी शुड नॉट यूज द ग्रीन पार्ट, वी शुड जस्ट टेक आउट द वाइट जेली पार्ट, and very carefully it has to be taken out because the green part is not healthy for ourselves. So that is why I'm not using aloe vera anywhere. So coconut oil massage, olive oil, castor oil. I have lots of oil with me. That's why you got very healthy hair. I'm very fond of like keeping hair products and all. Okay, that's great. So you were talking about hair mask, right? So what are the benefits of hair mask? We can talk about that also. Yeah, so talking about hair mask, it gives your hair the required shine. It makes your hair soft, frizzy, and it gives them the required moisture that is like required for your hair to be healthy. Because if your hair are frizzy, अगर आप उस पे comb करोगे तो they are anyways gonna fall, right? अगर आपके hair moisture proper उसमें moisture है तो it is gonna keep, मतलब वो हेल्दी रहेंगे. हाँ, ब्रेकेज भी कम होगा, लाइक राइट, लेस डैमेज होगा, लेस हेयर फॉल होगा. तो हेयर मास्क आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई यूज इन वेरी ऑफन. अभी आजकल तो बहुत ज्यादा, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गेट माई हेयर स्पा डन. मैं वो सलॉन में पैम्पर नहीं हो पा रही हूँ, तो मैं अपने आप को घर पे ही पैम्पर कर रही हूँ हेयर मास्क में. ओके, दैट्स ग्रेट. सो यू आर मेकिंग ऑर्गेनिक वंस और लाइक कैसे आप बना रहे हो? No, I'm using Vela Professional's hair mask. Okay. Earlier I have tried M Caffeine also, so that is also really good. But I wanted to change, so मैंने Vela try किया. It is also really good. Okay. तो आप घर में भी लाइक होममेड बनाते हो हेयर मास्क वगैरह, या फिर लाइक फॉर द स्किन ओनली यू ट्राई? Yeah, I have like tried earlier. I use coconut oil, olive oil, castor oil. So that is really healthy for your hair. So I would suggest कि अगर आप बाहर से नहीं खरीद रहे हो या नहीं खरीद पा रहे हो तो आप घर पे भी बना सकते हो, because बहुत सारे options available and you can anyways Google it out. यार, Google पे there are so many options to keep frizz-free hair. Yeah, exactly. Yeah. So yeah, although I do not try them very often, but yeah, I had tried them and they turn out to be really good. Yeah, you can mix honey also. Honey, okay. I have tried that, yeah. But you should not keep honey on your hair for a longer time, because I read it somewhere that honey makes the color of your hair lighter, so it will get bleached, like. Okay. Yeah, so you should not, if you're trying it with honey, तो उसको कम टाइम के लिए हेड पे रखो. Like 20 minutes is enough, right? हाँ, that is fine. 20 minutes is fine. Any mask can give it wonders in 20 minutes. And बाकी you can use a steam towel, like you can just hot towel, yeah. हॉट वाटर में टाल को डिप करके उसको थोड़ा सा स्क्वीज करके, एंड दिस हैज टू बी डन वेरी केयरफुली बिकॉज मैं बहुत जल चुकी हूँ उससे. अच्छा, ओके. एंड देन यू हैव टू जस्ट रैप इट इन योर हेड, एंड या उसके बाद एक्चुअली में यू कैन फील कि आपके बाल कितने मतलब बहुत अच्छे हो जाते हैं, एंड इट बिकम्स वेरी शाइनी, सॉफ्ट एंड ऑल. कोकोनट ऑयल से मसाज करना, एंड दीज थिंग्स आर रियली हेल्पफुल फॉर योर हेयर. आई हैव ट्राइड कोकोनट ऑयल एंड कैस्टर ऑयल. आई हैव मिक्स बोथ. उससे काफी अच्छा लाइक हेयर अच्छा रहता है, एंड ब्रेकेज भी कम हो जाती है हेयर में. Right. And you can try castor oil for your lashes also, for your eyebrows also. If there is less growth in your lashes, if there is less growth in your eyebrows, then you can try it there as well. Castor oil is like really good. It is amazing. Nowadays अभी तो आजकल बहुत ज्यादा जो डिमांड में ऑयल चला है, दैट इज अनियन ऑयल.
onion hair oil, right? Yeah. Have you used that, or like any review No, I've about not that? tried that. No, I don't Okay, like the smell of onion actually. okay. Just about So the I've smell. not tried it. Okay. I had like tried onion juice once. There was a time like long back ago, 5 years ago, or maybe 4 years ago, I was suffering from immense hair fall. So that time I used to try every home remedy to get it like cured. So that time I tried onion and it is actually really good. It turned out to be good if you are like consistent with it. Like if you are using it regularly, like आप ये ठान लो कि आपको हर 2 दिन में या 3 दिन में हेड वॉश करना है और हेड वॉश से पहले आपको अनियन को अपने स्कैल्प में लगाना है. If you are consistent with anything, it is gonna work. आपको टाइम देना होता है. We are very actually impatient. हम बहुत impatient हो जाते हैं. हमें लगता है एक चीज को एक बार करो तो अरे कुछ हुआ नहीं. बट कोई भी चीज इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं देती है. यू हैव टू गिव इट टाइम. यू हैव टू गिव इट अ टाइम ऑफ एटलीस्ट 2-3 months तो दो उसको. इट विल गिव रिजल्ट फॉर श्योर. बिकॉज आई हैव ट्राइड एंड आई हैव फेल्ट दैट. अगर आप किसी चीज को भी टाइम देते हो वो चीज ठीक हो जाती है. बट टाइम देना चाहिए. यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद एवरीथिंग. We have to be consistent. एग्जैक्टली. Even anything, skin ले लो या फिर कुछ भी ले लो, I think consistency बहुत जरूरी है. कोई भी Right. रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है. राइट. इवन इफ यू आर, अगर आप नाइट रूटीन में अपने स्किन केयर रूटीन में अगर आप सिर्फ रोज वाटर ही यूज कर रहे हो ना, उसमें भी अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे उसमें भी आपको फर्क आएगा. अगर आप मतलब वी हैव सीन वीडियोस ऑफ नाइट रूटीन. बहुत कुछ लोग लगाते हैं. मैं बहुत ज्यादा लाइक रोज वाटर ही यूज करती हूँ. टोनर एज अ टोनर आई थिंक सबसे ज्यादा बेस्ट रोज वाटर ही है. आप Right. कितने भी लाइक टोनर्स यूज कर लो, मेरे हिसाब से फॉर एनी स्किन टाइप रोज वाटर वर्क्स वंडर. Right. Even I have used it. I do not use it now. I am becoming very lazy day by day. Lockdown ने मुझे बहुत आलसी कर दिया. But yeah, I was earlier I was very consistent with my skincare routine and मैं night routine बहुत rigorously follow करती थी. I used to apply night gel. I used to apply rose water and everything. So yeah, I have to start that again. But yeah, if you'll be consistent, you'll see results for sure. I don't go for very elaborated skincare routine, but I, generally go for normal cleanser, the toner part, and the moisturizer. I don't skip the toner because I think वो बहुत ज़्यादा important होता है Right. skin के लिए, like because we live in Delhi. Delhi तो pollution का घर है. So I think open pores तो ऐसे हो जाते हैं. So I think toner works very good wonders for that. Exactly. Even I love toners. I'm very fond of it. मेरे को तो अगर मेरी डेस्क पे पड़ा है और मेरे सामने आ गया तो मैं नॉर्मली ऐसे टोन कर लेती हूँ अपनी स्किन को. I just love its smell, you know. So it was very nice having you on my podcast today, and we got very, good tips from you. I think the listeners would also like, will be very fond of these tips, and they'll start using it. I hope. So Nikita, it was great having you here with us. So I hope आगे भी हम आपके साथ दोबारा से podcast करें. At least for the I'll be waiting for that. even we will be waiting for that again. And I think the topic would be very interesting. कुछ मेकअप पे ही करेंगे अब. Because लोगों को लगता है मेकअप आर्टिस्ट है तो मेकअप के बारे में बात क्यों नहीं करते. So I think we'll keep a makeup part also now. For sure. So we'll see you then. See you. Bye-bye. Bye-bye. Take care. सो आई होप आज का एपिसोड भी गाइस आपको बहुत अच्छा लगा होगा. एंड आई होप हमारी गेस्ट ने जस्टिस किया होगा. आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेरीज होंगे, जो भी हेयर से रिलेटेड होंगे, इवन यू कैन DM ऑन माई इंस्टाग्राम और फेसबुक में हमेशा आपको बोलती हूँ. एंड आई एम रियली obliged to finish with my episode number 10 today. Keep showering your blessings and love and keep listening to my podcast. And you can follow us on Instagram, Facebook too. Till then, bye-bye, and I'll see you in the next episode number 11. Thank you.